morning, student. Welcome to the e-learning class. This is chapter 6, Introduction to PowerPoint. Now today we will read this chapter. So let's start. Akram studies in class 4. Today he has learned about various vitamins and their health benefits in his class. While revising the topic, his elder sister Fatima comes in. She studies in class 8. She tells Akram that they can prepare a PowerPoint presentation on this topic. PowerPoint is a new thing for Akram. Now it's for Fatima to elaborate on what is PowerPoint and how it is used. Introduction to PowerPoint. Fatima first gives Akram a brief account of PowerPoint. She tells Akram that PowerPoint is an application software program that is widely used to make presentations. What is a presentation? Asks Akram. Fatima replies that a presentation is a collection of images, text, videos, and audios put together to convey vital information briefly, conveniently, and attractively. It makes the information more interesting, Fatima tells Akram. She also tells him that PowerPoint is also used as business software to create stylish, creative, and clear reports with graphical representations. Akram now wants to know how a presentation is made in PowerPoint. In PowerPoint, there are slides that are used to make a presentation. Fatima tells Akram. But what is a slide? Asks Akram. An electronic page used to represent text, images, and audio and video files is called a slide. Fatima explains to Akram. Now it's time to start. PowerPoint tells Fatima and switches on the computer. Starting PowerPoint. Fatima guides Akram to start PowerPoint by following these steps. He clicks on the Start button. Fatima asks him to click on PowerPoint. The Start screen of PowerPoint opens. Fatima tells Akram that he can do either of the following. Click on the blank presentation to create a new presentation. Choose a template for your presentation. Akram clicks on the blank presentation. A new blank presentation named Presentation 1 opens. Parts of a PowerPoint window. After opening PowerPoint, Fatima shows its various parts to Akram. अब हम देखेंगे PowerPoint विंडोज़ के पार्ट्स. ओके, ये है हमारा स्लाइड्स नेविगेशन पेन, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, प्लेस होल्डर एंड स्लाइड पेन. ओके, quick access toolbar. Quick access toolbar is used for a quick access to various tools. ये हमारा क्या है? ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है. ये हमारा सेव है, ये हमारा अंडू है, ये हमारा रीडू है, ये स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड ये हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार. Ribbon. The ribbon contains various tabs under which various commands are organized in different groups. Title bar. It displays the name of the current presentation. Slides navigation pane. It allows to view all slides in the presentation. Slide pane. It displays all the slides in the presentation and the user can shift from one slide to the other. It makes easy checking the layout, design and content of a slide.
Placeholder. It is the dotted rectangular box where text, pictures, and graphs are placed. Ruler. A PowerPoint window has two rulers, vertical and horizontal, which help us align the text and objects on a slide. Status bar. It is present at the bottom of a PowerPoint window. The status bar has the following components. Notes. Clicking on it opens up the notes pane. It is used to insert small notes to each slide. Comments. It is used to give comments or inputs that are required on the slide. View buttons. This is used to view slides in different ways. Normal, the default view. Slide shorter. All the slides get displayed in small formats. Reading view hides all editing tools and shows only slide content. Slide show shows the slides during the presentation with all the effects and animations. Scroll bar. There are two scroll bars, vertical and horizontal, which help us see the contents of the slide. Creating a presentation. Fatima has familiarized Akram with various parts of a PowerPoint window. Now she guides him in creating a presentation. Using a theme, Fatima tells Akram that he can make his presentation related to a topic by using various themes. She asks him to follow these steps. After opening a blank presentation, he goes to the design option given in the main menu tab and clicks on it. Several themes get displayed. He chooses the desired one and the themes get selected in the slide. The slide now has more colors and effects. Using a template. Fatima tells Akram that he can also create a presentation by using various templates. She guides him through these steps. He starts PowerPoint again. The start screen shows various templates. He selects a template. Fatima tells him that after choosing a template, all the slides in the presentation will have the same background, thus eliminating the need for adding templates for each slide. अगर आपको क्रिएट करना है प्रेजेंटेशन देन आप थीम और टेम्पलेट दोनों का यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप थीम का यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए प्रेजेंटेशन देन आप क्या करते हैं, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करने के बाद डिज़ाइन ऑप्शन पर जाते हैं जो कि मेन्यू टैब के अंदर होता है एंड आप उस पर क्लिक करते हैं. तो क्या होता है, आपको बहुत सारे थीम्स क्या होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं. देन आपको जो भी डिज़ायर्ड वन है आप उसको चूज़ करते हो तो क्या होता है, आपका जो थीम है वो सेलेक्ट हो जाता है आपकी स्लाइड में. ओके, उससे क्या होता है, आपकी जो स्लाइड होती है ना वो बहुत ज़्यादा कलरफुल और इफ़ेक्टिव हो जाती है. ठीक है. और अगर आप टेम्पलेट का यूज़ करते हो प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए देन आप क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट को एंड आप देखते हो स्टार्ट स्क्रीन पे क्या होता है, बहुत सारे टेम्पलेट आपको शो होते हैं. देन आप वहाँ से आपको जो भी टेम्पलेट चूज़ करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो और वो आपकी स्लाइड पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा. ओके. एंटरिंग टेक्स्ट. फातिमा नाउ आस्क्स tells Akram that entering text is very easy on a slide. Double click on the placeholder and start typing the text, exclaims Fatima. Akram then types the text as shown in the image given below. Formatting text. Akram now wants to beautify the text to make his presentation more appealing and attractive. Fatima tells him that he can do so by changing font
color, style by adding effects and so on. She asks Akram to locate the font group. Akram does so and he notices that the text formatting options here are similar to those in Word. As Akram is already familiar with formatting in Word, he changes the font style, font size and font case with ease. Changing font style, he first selects the text that he wants to format. Then he goes to the font group given in the Home tab and clicks on the font drop-down arrow. He clicks the desired font style and then clicks anywhere on the slide to see the effect. Changing font size. After selecting the text, Akram clicks on the font size drop-down arrow. Fatima tells him that he can also input desired size in font size. He clicks on the desired font size and then clicks anywhere on the slide to see the effect. Changing font case. After selecting the text, Akram locates the change case drop-down arrow and clicks on the desired font case. He then clicks anywhere on the slide to see the effect. Akram also changes the font color of the text in the subtitle. अगर आपको एंटर करना है टेक्स्ट देन आप क्या करोगे, प्लेस होल्डर में डबल क्लिक करोगे एंड आप स्टार्ट करोगे टाइपिंग. ठीक है. अगर आपको चेंज करना है अपने टेक्स्ट की फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, देन आप क्या करोगे, आप फ़ॉन्ट ग्रुप में जाओगे. आप वहाँ से उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट के कलर को क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो. ठीक है. सेविंग अ प्रेजेंटेशन. Akram now saves the file for future access. To save his presentation, he performs the following steps on his own. He goes to the File menu. Then he clicks on the Save As option and chooses the location where he wants to save the file. He then gives a name All About Vitamins to the file and clicks on the Save button. Akram observes that the file gets saved with a .pptx file extension. Opening a presentation. Fatima asks Akram how can he open his saved presentation. I will click on the open options in the file menu. Choose the file from its location and click on the open button, says Akram and opens the presentation. अगर आपको सेव करना है अपना प्रेजेंटेशन देन आप क्या करोगे, आप फाइल मेन्यू पर जाओगे और क्लिक करोगे सेव एज ऑप्शन पर. देन आप चूज़ करोगे लोकेशन जहाँ पर आप सेव करना चाहते हो फाइल को. देन आप फाइल को नेम दोगे. ठीक है. एंड आप क्लिक करोगे सेव बटन पर. देन क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी वो सेव हो जाएगी .pptx फाइल एक्सटेंशन के साथ. ठीक है. और अगर आपको ओपन करना है अपना प्रेजेंटेशन देन आप क्या करोगे, आप फाइल मेन्यू पर जाओगे और ओपन ऑप्शन पर क्लिक करोगे. देन आप चूज़ करोगे लोकेशन जहाँ पर आपने फ़ाइल को सेव किया था एंड देन आप क्लिक करोगे ओपन बटन पर. देन क्या होगा, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन हो जाएगा. ओके. क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन. फॉर क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन फर्स्ट गो टू द फाइल मेन्यू एंड चूज़ क्लोज. Fatima tells Akram. Akram does so and notices that all the slides are closed but not the PowerPoint. If you want to close the PowerPoint window, click on the cross button. Fatima tells Akram. अगर आप अपना प्रेजेंटेशन क्लोज़ करना चाहते हैं देन आप क्या करेंगे, आप फाइल मेन्यू पर जाएंगे और चूज़ करेंगे क्लोज़. तो आपकी सारी जो स्लाइड्स होंगी वो क्या होंगी, वो क्लोज़ हो जाएंगी. बट आपका पावर पॉइंट विंडो क्लोज़ नहीं होगा. अगर आपको अपना पावर पॉइंट विंडो क्लोज़ करना है देन आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे क्रॉस बटन पर. तब आपका पावर पॉइंट विंडो क्लोज़ हो जाएगा. नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.